हेलो। चलिए शुरू करते हैं एक और लेक्चर। लास्ट के लेक्चर्स में हमने बात करी ओम्स लॉ के बारे में, काफी डिटेल में हमने ओम्स लॉ के बारे में बात करी। काफी जो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस करने की कोशिश करी हमने। बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। उसके ग्राफ वी वर्सेस आई ग्राफ होता है, उसके स्लोप से हम कैसे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आई वर्सेस बी ग्राफ रहे तो वहां से हम कैसे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये सारी चीजों के बारे में हमने बात करी। साथ ही साथ हमने ये भी बात करी कि फैक्टर्स, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो रेजिस्टेंस के वैल्यू को अफेक्ट करते हैं इन एनी कंडक्टर। ठीक है। और टेम्परेचर का एक क्या इफेक्ट रहता है ओवरऑल कंडक्टर पे, सेमीकंडक्टर पे, अलॉयज पे। ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में बात करी और जाते जाते एट द एंड वी डिस्कस अबाउट द कंडक्टेंस, कंडक्टर एंड कंडक्टिविटी। इन सारी चीजों के बारे में बात की। टुडे we are here to discuss about the combination of resistors. Okay, well, today we'll be talking about the combination of resistors. Here, we'll talk about two important things, which is the series combination and another one is the parallel combination. Acha, in today's lecture only, we will try to understand why ammeters are connected in series and why voltmeters are connected in parallel. Okay, and what is the significance of that? And we will try to derive the equivalent resistance. Okay, calculation and practical circuit diagrams. I don't think in today's lecture we would be able to do that. Maybe in the next lecture we will take a lot of questions. Acha, uh, there will be almost 12, 13, 14 questions. I will make you practice in the class only. Okay. After that, there's a lot because this topic is important. In the previous lecture also, there was lecture 5. So in that one, we discussed the Ohm's law. That was important. The combination of resistors. This is important. It's like the favorite topics of board exam. Okay. For sure, the questions will come from there. Okay, for sure. That's why we will practice more number of questions. Okay. So now let's not waste our time and let's start. First one, the first thing that we have to start is the. Let me check the ink. Okay, everything fine. So resistors in series. Acha, when we were discussing about the resistors in the last lecture, I told you that resistors are something which produces, kind of hindrance which try to stop the things. Okay, resistors. Resistance is the how much hindrance it is able to produce, that is called as the resistance. ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो बात करते हैं रेजिस्टर्स की। रेजिस्टर्स एक्चुअली होता क्या है? पहले मैं आई शो यू विद द सिंबल इन इलेक्ट्रिक in our chapter or in electricity. We denote the resistance like this one, R से denote करते हैं and we denote the resistance like this one. कहीं से भी पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस की बारे में बात करने वाले हैं। वेल, जो रेजिस्टर्स होते हैं इन डेली लाइफ एक्चुअली में, दे आर मे बी योर बल्ब हो गए, ठीक है, फैंस, ओके, और एनी अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, दे एक्ट एज अ रेजिस्टर्स। ठीक है। अच्छा, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से ये एक वायर है, ठीक है, और ये वायर जाके कहीं पे ये तो पतला सा हो गया, या मान लो एक रोड है, ठीक है, थोड़ा पतला हो गया, और या फिर मान लो इस पॉइंट पे द रोड इज नॉट गुड, कंडीशन उसका खराब है। अगेन इट बिकम ब्रॉड एंड इजिली इट इज गोइंग, अगेन इट बिकम शॉर्ट और सम प्रॉब्लम केम, ओके, is going. Now the road has become very problematic here. Road is very problematic here. Now you see that the car which is trying to move from here, it is facing challenges step by step. This is the first step where he got stuck. After that, again fine, it goes, and again it gets problems. So in different phases he or she is getting the problem. Okay, because of that the car owner will feel more hindrance, right? It will feel more hindrance. In terms of electricity, we can say that if you consider this car as the electrons, okay, so it will feel more resistance, right? Clearly we can understand. Okay, when a number of problems coming in between your path, so
it will create the more resistance. So same way जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे इन द इलेक्ट्रिक, जैसे कि मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है, ठीक है। सो इन दिस वन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, ठीक है, electrons are flowing through it easily. Now if I adds up some resistors in series, ठीक है, कैसे हम करने वाले हैं, जैसे कि मैं एक सर्किट डायग्राम बना के बता देता हूँ। लेट्स से दिस इज आवर बैटरी, यहाँ से कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दिस इज माय फर्स्ट रजिस्टर, दिस इज माय सेकंड रजिस्टर, दिस इज माय सॉरी सॉरी, okay, this is my first register, this is my second register, this is my third register, और इसको कनेक्ट कर देते हैं एक स्विच से, ठीक है। अच्छा, इस स्विच को जब ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो R2 रेजिस्टेंस और यहाँ पे जो R3 रेजिस्टेंस है, ये तीनों मिला के, एडिंग दिस ऑल थ्री, वी विल गेट सम R इक्विवेलेंट, ठीक है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आज in this lecture today we will try to understand how to find R equivalent, because when you go and use the formula V equals to IR, and when you have to find, let's say you are given with the V, R is not given, R1 R2, instead of R, R1 R2 and R3 are given, and you are supposed to find the I. So at that time you have to find the R equivalent, then put in this formula. Clear? Then you have to put it in this formula. So you are supposed to do like that. Clear? Clear here? So in today's lecture, we'll try to find out how we find that R equivalent. Okay. Acha, I'll show you also from the FET simulation. I'll show you also the things which I'm seeing right now. Let's say if you take a ammeter, मैं अभी के लिए, if you want to just believe me, I'll show you. After this lecture, I'll tell you at the end why the emitter is connected in series and all those things. So let's say I connected a emitter here, ठीक है, emitter here. यहाँ पे जो रीडिंग आएगी, सेम रीडिंग यहाँ पे भी आएगी। इफ आई कनेक्ट द एमीटर यहाँ, वहां पे भी सेम रीडिंग आएगी, यहाँ पे भी सेम रीडिंग आएगी, यहाँ पे भी सेम रीडिंग आएगी। मीन्स द करंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, throughout this electric circuit is same, right? There's no problem in that. The current throughout the this electric circuit is same, but voltage varies. Okay, if you take a voltmeter, connect it here, voltmeter, the reading will be different. Okay, now if you connect it uh, 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 if you connect it here, the voltage will be different. If you connect it here, the voltage zone will be different. But what I am saying, there will be some fixed amount of voltage. Let's say you connect a voltmeter here, and let's say it is showing 18 volt. Okay, so whatever voltage showing here, let's say this is V1, and whatever the voltage showing here, let's say this is V2. अच्छा, यहाँ और यहाँ connect करोगे तो फिर से 18 volt ही दिखाएगा, because that's the same thing. So let's say this is V2. So when you add V1 plus V2, you will end up getting this 18 only. ठीक है। सो बेसिकली इफ द वोल्टेज इज डिवाइडिंग, सो एक सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि द करंट रिमेन सेम, बट वोल्टेज डिवाइड्स, voltage divides. Whatever I am speaking, try to focus there. Okay, voltage divides, मतलब कि let's say I provided a voltage of V from the batteries starting. So if 2 3 resistors are there, so it will be divided as V1 plus V2 plus V3, and adding these three, I will get the exact my initial voltage applied, and the current remains the same. ठीक है, current remains the same. अच्छा, I try to show you using a simulation. Let me show you. Okay, here we have a circuit diagram. Clearly, let's switch on it. चल रहा भाई, हाँ. Okay, now when I switch it on, clearly you can see the three bulbs that you can consider it as a resistors. When they are connected in series, the current is flowing through it. Okay, and all are working at the same time. Acha. Now
let us take a current chart, या फिर let us take a ammeter. If you keep the ammeter here, you can see the current supplying is 0.6 ampere. If I keep it here, same 0.6. If I keep it here, 0.6, 0.6, all throughout the circuit, the current is same. Now बात कर लेते voltmeter की. So let's I keep one here and here. So see, I'm supplying a voltage of 18 volt here. Okay, I'm supplying a voltage of 18 volt here. Now, if you keep it here, so here also for sure 18 volt will be supplied. If you keep it here, then the voltage difference you can see. So voltage becomes 6 volt. If you keep it here, voltage become 12 volt. Okay, acha, if you keep it here, 6 volt. If you keep it here and if you keep it here, so basically you can see, since the resistors are of same, resistors are same, that's why the voltage divided into 6 and here also 6. So 6 volt ka difference you can see it has divided. So clearly initially it was 18, now it has become, here it is 6 plus 12, total of 18. Okay, between the resistors you can see this is 6 volt, from here to here this is 6 volt, and from here to here, adding this 6 plus 6 plus 6 you get the 18. So now you can understand key current remains the same in that circuit and the voltage changes. Okay, acha, when I try removing this bulb, okay, let us remove this bulb. Now what happens? The other two bulbs also stops glowing. Okay, the other two bulbs also stops glowing. This shows that in series combination, if any one of them goes fault, the whole circuit stops. Acha, when I add them, see, let's try to add them. Uh, 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 uh. Okay, now if you can notice, it is glowing more powerful or more intense than the previous one. Okay, so this is also a case that if you are having more number of resistors connected in series, then the power output that you are getting will be less. Also, some more things मैं सारी चीजें यहीं पे बता देना चाहता हूँ कि if you observe both the resistors या फिर both the lights, the intensity of both the lights is exactly same. अगर मैं यहाँ पे तीसरा बल्ब भी लगा दूं, ठीक है, if I connect the third valve also here as it was connected earlier, okay. Now you can see the intensity reduced, but the intensity in all the three bulbs are same. ठीक है, ये clear हुआ, ये clear हुआ. If it is clear, then we move back to our main screen, and there we will be talking about the derivation to find the R equivalent. ठीक है, R equivalent find करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अच्छा, एक पहले एक let us draw this one, a circuit diagram. ठीक है, let us draw a circuit diagram. So well, we are talking about in series combination first of all. So I am having a circuit diagram. Let us take that one only. Okay, this one. Now in this one, if you see, we are having three circuits. Three resistors. First one is R1, second one is R2, and third one is R3. Okay, and the voltage supplied is V, but across the resistors the voltage will change. V and V will change. Now I know that the current remains same in all of them, but V, total V, will be sum of V1 plus V2 plus V3. Tell me if it is clear. Current will remain constant, but the voltage will change. Voltage across all the resistors will be different. Okay, now according to Ohm's law, according to Ohm's law, what I can see for different resistors, okay, current supplied is same. So can I write it as V1 equals to I R1? Okay, can I write it like this? V1 equals to IR1. Similarly, V2 I can write it as IR2, and V3 I can write it as IR3. ठीक है,
Let's say this is equation 1, this is 2, and this is 3. If I add all these three equations, I will get V1 plus V2 plus V3 is equals to I times R1 plus I times R2 plus I times R3. So V1 plus V2 plus V3 कितना है? V. See from here. तो I can write it as V equals to I यहाँ से कॉमन ले ले and I say R1 plus R2 plus R3. अच्छा, यहाँ पे भी अगर if you try to consider कि यहाँ जो V है according to the Ohm's law, if I write it as completely I और एक R equivalent जो resistance का वैल्यू आएगा वो कर ले is equals to I R1 plus R2 plus R3. Since the I remains same in the whole circuit, so I can cancel it. ठीक है. So what I got, R is equivalent is equals to R1 plus R2 plus R3. ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? R equivalent क्या आ गया? So in series combination, the R equivalent, you have nothing to do. It's simplest one. You have to just add it. Just add all of them, R1 plus R2 plus R3. You will get the R equivalent. Clear हुआ ये? Clear हुआ? ठीक है? If this is clear, then in general also we can write it. Okay, in general also we can write it. In general हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कि मान लो we have a n number of resistors. ठीक है? So R equivalent what we can write? R1 plus R2 plus R3 and this will keep on going up to Rn. जितना whatever the number of resistors you are having, to find the R equivalent just add all of them simply normally. ठीक है? Clear हुआ? If this is clear, I'll tell you some of the points that I was showing in that simulation also. First one, the equivalent resistance is always greater. ठीक है, जैसे कि मैं एक रेजिस्टर्स ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे दो रेजिस्टर मैंने ले लिए. ठीक है, मैं leave it, मैं पूरा सर्किट नहीं बना रहा. Let's say this is a 5 ohm, this is 3 ohm. So equivalent resistors, for sure this is 5 plus 3, so 8 ohm आएगा, which is more than both the resistors R1 and R2. ठीक है. अच्छा, in this kind of connection there is only one pathway for the current to flow. ठीक है, current जो है it will come from here and there is only one path for the current to flow. ठीक है. अच्छा, in that simulation one more thing I told you, if I open the circuit, if the circuit is cut by any method, if you cut the wire, if you remove, or maybe the bulb goes off, okay, it goes fuse, anything happens, the whole circuit will be open and nothing will work out after that. Clear? Fourth thing, it is called as the voltage divider. Voltage divider. ठीक है, means whatever the voltage I am supplying from here, it is getting divided into V1 plus V2 plus V3 such that V is equals to V1 plus V2 plus V3. And also current remains the same everywhere. Everywhere the electric current remains the same. There's no problem in that. ठीक है? Okay. Now let us talk about the resistors in parallel combination. ठीक है? Now this one you can understand as let's say there's a lot of people in a uh, maybe running on a road, or maybe there's a lot of people in a stadium. Okay, now when they have to go out of a stadium suddenly, so will it be easier for them to move through one gate, or it will be easier for them to move through many gates? Maybe a small only, no problem, but many gates. So if there are more number of gates available for the people to go out of the stadium, it will be easier for them, right? Same concept is with the electrons flowing in an electric circuit. If they have more options, more paths available for them to pass, so then it will be easier for them to move. Okay, like let's say I'll draw a circuit, small circuit diagram. Let's connect a battery here. Okay, and we have, let's say, three paths available here. Okay, we connect a resistor, some resistor R1, R2 and R3. Okay, and then connecting it back to the battery, let's say I connect a switch here. Okay, so when I switch it on, all the resistors R1, R2 and R3, they will glow up. Let's say these are bulbs. So now if you see here, I,
the current which I am supplying here, it is dividing into I1, I2 and I3. Here the current is breaking. Okay. And then again coming back here. Okay. So the current here in the series combination में क्या हुआ था? Voltage divide हुआ था. Here the will divide. Current will divide. That also such that if I supply a current of I, then I must be equals to I1 plus I2 plus I3. It must be like that. Clear? ये clear है? ठीक है? Now, if this is clear, one second. Also, in the series combination, what we learned that voltage divides itself into V1, V2, V3 and so on. Here, current divides into I1, I2, I3 and so on, but voltage remains same. Voltage remain same everywhere in the circuit. Voltage remain same everywhere in the circuit. ठीक है. अच्छा, इस चीज को हम फिर से सिमुलेशन की मदद से समझने की कोशिश कर सकते हैं. अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं. While solving the circuit, so when we have question that is asking individually, so that we can do, but they will be asking to find the R equivalent. Okay, means what is the total resistance being produced by these three in parallel combination. So now you try to understand whether the equivalent resistance will be more or it will be less. See, if you remember the series combination की अभी हमने बात करी, तो उसमें क्या हुआ कि it's like a road which is one resistance, another resistance, it keeps on going. So there is a hindrance to flow of electrons again and again in the same path. But here, electrons can move, some electrons can move here. Okay, some electrons can move here, some electrons can go here. So it is easy for them to flow. So when I will find the R equivalent total resistance produced by these three, it will be obviously less. Okay, that's why in the home we prefer the parallel combination. In our homes, bulb, light, everything is there. It is connected. Washing machine, fridge, anything, everything. It is connected in the parallel combination. Acha. One more reason is there that why we connect the home appliances in parallel combination. That we will talk. That is a really important question. Take it. Now let us quickly go back to the FET simulation. Okay. As you can see, I have made a circuit diagram and where I have connected three bulbs that you can call it as R1, R2 and R3 as three resistors, and they are connected in parallel. Okay, the current will be going from here and it will be dividing. Okay, current actually will go from here positive to negative. So here it will be dividing into three resistors and then it will come back. Now see what happens when I switch it on. Okay, as you can see, the current starts moving from here and going in this direction. Okay, and if you remember the earlier simulation, you can go back to video and see in earlier simulation when we connected the bulbs in series, and same thing, we used the two batteries. There also we used the two batteries only, but the light was not this much bright. Remember, the light was not this much bright because voltage there got reduced. Okay, voltage got divided, but here the current will be dividing and voltage always remains the same. Okay, see, current it is going from here, and it is dividing into three parts, here and coming back here. Now if you want, I can show you. See, this is the voltmeter. Okay, I'll check here how much is this. In the last one it was 18 volt. Now see, 18 volt. Now you keep it here also 18 volt. Now you keep it between these two bulbs, 18 volt. Now you keep it between these two bulbs, 18 volt. Here and here, 18 volt. Here and here, 18 volt, 18 volt, 18. No, this becomes same bar. That's why 0. Here, 18 volt. Okay, so everywhere the voltage remains the same. Now let's check the current. Okay, now let's check the current value. See how much is the current? 5.4 ampere. Okay.
5.4 ampere current I am providing. Here it become 1.8, 1.8, 1. 1.8. Okay. So if you add all of them, 1.8 plus 1.8 plus 1.8, you will get 5.4. Right. Here you see 1.8, 1.8, 1.8, here 5.4. Okay. So clearly it shows that the current is being divided into I1, I2, and I3, and the sum of all those I1, I2, and I3 is the equals to the actual electric current how much I am providing. Now let's see, hmm, if somehow if somehow any circuit gets break. Okay, let's say this circuit I cut it. Okay, in that case also the other two will keep on working. And what happens to the current? See, 3.6, it become 1.8 here, and this is 1.8, and one circuit got damaged. Maybe somehow, let's say I connect it back. Okay, and let's say by any chances, any equipment of your home, or maybe the bulb or fan, anything stops working. Okay, stops working. In that case, see, other two resistors or other two bulbs are still glowing. There's no problem in that. Electrons are still flowing through it. Clear? Is this clear? So that is why I'll tell you the reason. Questions में ये बहुत important questions आते हैं kind of कि why the जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो भी सर्किट हमारे घर में यूज होता है, ठीक है, why they use the parallel combination. This is the reason. Okay, first thing, voltage remains the same everywhere. Okay, voltage remains the same, but current divides according to the need of the equipment. Let's say कि कोई इक्विपमेंट जैसे इलेक्ट्रिक मोटर है, पानी पंप करने वाला, उसको ज्यादा करंट चाहिए. एक छोटा सा एलईडी बल्ब है, उसको कम करंट चाहिए. बट एवरीवन नीड्स द सेम वोल्टेज. ये एक रीजन हो गया. दूसरा ये रीजन कि इन दिस वन द करंट सप्लाइड इज मोर. Okay, that is the another reason. Third one, if somehow कोई electrical equipment काम करना बंद कर दे, या some bulb let's say get fused, or if there is a some circuit break in that uh, equipment, okay, then it will not affect the others. The other equipments will keep on working same as it is. Clear? ये clear हुआ? ठीक है. We use the that's why we use the parallel combination in our home. Clear? Okay. Now, if it is clear, now we quickly get back to our note. Okay. Now, let us try to find out the R equivalent. R equivalent. Now, if you remember, मैंने क्या बताया कि अगर total current flowing through the this one, let me take the diagram. I might be having hmm, resistors in parallel. No, there's no diagram. I'll draw it. Okay. Same thing. I'm drawing it again. This is R1. This is R2. This is R3. Okay. Let's say the current is flowing from here. This is a positive one. This is negative. Current is flowing in this direction. Okay, let's say this is R1, this is R2, this is R3. So the voltage remains here also. Voltage is V, voltage is V, voltage is V. But whatever the current I am supplying, this is dividing into I1, I2, and I3. Now I know one thing, that I is equals to I1 plus I2 plus I3. Clear? But voltage remains same. Voltage remain same. So same idea that we have used to prove the resistors in series. What I can write according to Ohm's law. See, according to Ohm's law, what I can write? I1, I can write what? V equals to IR होता था ना? V is equals to IR. So I can be written as V by R1. अच्छा, V1 क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि वोल्टेज रिमेन सेम एवरीवेयर. ठीक है. सिमिलरली
जो I2 है हमारा कैन बी रिटन एज V by R2 एंड I3 जो है हमारा विच इज V by R3। ठीक है, नाउ लेट अस ऐड ऑल ऑफ देम। ठीक है, I1 plus I2 plus I3 is equals to I, that we know. So let's put the values, that is V by R1 plus V by R2 plus V by R3 is equals to I. Now according to Ohm's law, let's assume कि ये पूरे का एक रेजिस्टर है and that I see as R equivalent. So can I write it as VY R equivalent? Clear? We can write it like this. Okay. Now let us take V common from here. Then it will be 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. That will be equals to V by R equivalent. Okay, if you cancel this out, V from both the side, because V is same, okay, you will get 1 by R equivalent must be equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This is your expression to find the R equivalent का value when R1, R2 and R3 are in parallel. Clear? In general, what we can say? In general, my 1 by R equivalent will be equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on. जितने भी combinations हो, जितने भी registers हो जो parallel में लगे हुए हैं, you can add it. क्वेश्चंस में मैं ये बता दूं, क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा ये नहीं करेंगे, मैक्सिमम 2 या 3 आएगा। ठीक है, अच्छा, इफ वी हैव द टू रजिस्टर्स, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से दो रजिस्टर से ये R1 है, ये R2 है और इट इज कनेक्टेड टू द बैटरी, नीचे जो भी है नीचे अपना कनेक्ट हो रखा। ठीक है, ये कनेक्ट हो रखा। So now here let's say this is R1, this is R2. So here if we have to find the R equivalent, so I can write 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2. Clear? Now let's try to solve a little bit. This one, this thing I'll be doing for two resistors only. एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आता है जो हेल्पफुल रहता है कभी कभी। So I can write it as R2 plus R1 by R1 R2. दिस इज इक्वल टू 1 बाय आर इक्विवेलेंट। यहाँ से अगर हम आर इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखने की कोशिश करें देन आई कैन राइट इट एज R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, डायरेक्टली ये हम लिख सकते हैं। तो इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नाउ लेट्स टॉक द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देन वी विल एंड दिस लेक्चर। In next lecture we will be dedicatedly doing a lot of problems based on this. Okay, because this is one of the favorite topic of boards exam and they ask a lot of questions from here. Okay, so we'll be doing a lot of questions, circuit diagram ke questions, finding the R equivalent in series and parallel combination, finding the other aspects of the circuit, so everything we will do. Okay, now as I said, the first one, the resistance equivalent, if you find this R equivalent, it is always less than the rest of the R1, R2 and whatever it is. जितने भी R1, R2 जो भी जिसका जो भी वैल्यू है, R equivalent का जो वैल्यू आएगा that will be always less than R1, R2, R3 and so on. ठीक है, सीरीज में क्या था, ज्यादा आता था, सीरीज में जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उसके वैल्यू से आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हमेशा ज्यादा आता था। इन दिस वन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इक्विवेलेंट विल ऑलवेज कम आउट टू बी लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द सर्किट डायग्राम। क्लियर? क्लियर? सेकेंड वन, द current has multiple path options for the flow of current, for the flow of electric current. Clear? Third one, it acts as a current divider. Current divider. How it acts as a current divider? Like let's say I supply a current of I, it will break down into, let's say if there are two resistors, so it will break down into I1 plus I2 such that when I add I1 and I2, I will get back the value of I. Clear? And at last, voltage remains same in throughout the circuit.
ठीक है, वोल्टेज रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द सर्किट। क्लियर है? ये क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, नाउ if this is clear, now we are in a position to talk द एक क्वेश्चन जो हम अभी तक छोड़ते आए हैं कि एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, व्हाई द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, व्हाई एमीटर जो होता है, पहले बात कर लेते हैं एमीटर की। एमीटर जो होता है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, और एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसको बहुत ज्यादा कम रखने की कोशिश करी जाती है। ठीक है, यहीं से एक केस आता है आइडियल एमीटर की। ऐसा होता नहीं है बट हम कॉन्सेप्ट के थ्रू हम उसके बारे में बात कर सकते हैं कि आइडियल एमीटर होता क्या है। आइडियल एमीटर इज समथिंग जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो हो। अच्छा, ऐसा करना प्रैक्टिकली फिलहाल अभी तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम एमीटर बना रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सर्किट हम यूज करेंगे, एंड वट एवर सर्किट वी आर यूजिंग उसमें थोड़ा बहुत तो वो रेजिस्टेंस वो क्रिएट करेगा ही। सो आइडियल एमीटर मतलब कि कुछ एक ऐसा एमीटर जैसा हम चाहते हैं कि वैसा हो, उसका रेजिस्टेंस एकदम जीरो होता है। बट जो भी हम एमीटर बनाते हैं उसका रेजिस्टेंस वी ट्राई टू कीप इट वेरी लेस, वेरी लेस। ठीक है, सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एमीटर क्या है? एमीटर क्या है कि कोई भी एक सर्किट है। ठीक है, कोई भी एक सर्किट है, तो उसमें आई एम जस्ट ड्राइंग रैंडमली। ठीक है, कोई एक सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से कि हमें एमीटर लगाना है। ठीक है, लेट्स से पॉजिटिव नेगेटिव एमीटर को ए से ऐसे करके शो करते हैं। यहाँ पे हमें एमीटर लगाना है। एमीटर का काम क्या है कि वट एवर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू इट, वो उसको काउंट करेगा पर सेकेंड। पर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन फाउंड पास कर रहा है, उसको पर सेकेंड वो काउंट करेगा, एंड इट विल डिस्प्ले यू कि 5 एम्पियर का करंट है, 7 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, 12 एम्पियर का, 13 एम्पियर का, जो भी है वो करंट का वैल्यू भी शो करेगा। नाउ लेट्स से कि अगर इसके पास खुद का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये खुद में एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो it will hinder some of the electrons flowing through it. It will stop some of the electrons flowing through it. Okay, and in that case, it will not give you the exact value how much current is flowing through it. ठीक है, समझ आया? ठीक है। अच्छा, इसको सीरीज में क्यों इंस्टॉल किया जाता है? बिकॉज इट हैव टू काउंट हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, एग्जैक्टली थ्रू द सर्किट। ओके, दैट्स व्हाई द इसका जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम रखा जाता है, सीरीज में इसको ऐड किया जाता है। बात करें वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर का काम है क्या चेक करना? वोल्टेज। अच्छा, वोल्टेज होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पीईटी लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे एक फिजिक्स के टीचर थे 11th 12th में, वाज रियली नाइस। अभी वो अन अकेडमी में काम करते हैं। उनका नाम था पीडी, प्रिंस दुबे। ठीक है, रियली ग्रेट यार। ओके, नाउ जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका काम क्या होता है कि किसी सर्किट में किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल क्या है उसको चेक करना। दैट्स व्हाई लेट्स से ये एक सर्किट है। ठीक है, स्विच जो है मैंने ऑन कर रखा है। ठीक है, डोंट माइंड, आई एम जस्ट ड्राइंग इट रफली। ठीक है, so let's say this is R1. So now when I have to find the potential difference, मैं क्या करेगा? I will connect from here and the voltmeter will be here, positive negative, in the parallel with the resistance। ठीक है, parallel with the resistance। अच्छा, वोल्टमीटर में क्या होता है? रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का इट इज एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली हाई। ठीक है, जितना हाई रख सके, so that we don't want the current to flow through it। We don't want the current to flow through this circuit, we want the current to flow through this circuit so that I can find the potential difference between these points, let's say A and B। ठीक है, so in voltmeter resistance is extremely high, in ammeter resistance is extremely low। Okay, also the ammeter is always connected in series and voltmeter is connected in parallel because it has to measure the potential difference between two points। क्लियर है? क्लियर है? ये क्लियर हुआ? ठीक है, ये हो गई बात
अच्छा, इसमें भी आइडियल वोल्ट मीटर की हम यहाँ पे बात नहीं करते हैं। रेजिस्टेंस का वैल्यू तो अपने हिसाब से जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर इज लाइक दैट। अच्छा, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने बात करी थी ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में बात हो रही थी, राइट। शायद ओम्स लॉ वाले का लेक्चर में ही हमने ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में बात करी थी, ठीक है। एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, मैं वो बता देता हूँ। नेक्स्ट वी विल रैप इट अप। ओके, व्हीट स्टोन। जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट से ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट इफ यू विश टू लर्न आई टेल यू क्विकली, ठीक है। आई टेक द डायग्राम। लेट्स से योर सर्किट डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस वन, ठीक है। यहाँ से फिर अपना आगे कनेक्टेड है, यहाँ पे जो भी है आगे अपना कनेक्टेड है, ठीक है। there's no question about that. But your resistance are connected like this one: R1, R2, R3, and R4, R5, and something like this. ठीक है। Now, in that case, this is called as the Wheatstone arrangement. Wheatstone क्यों कहा गया? Because this arrangement was first used by C.F. Wheatstone, एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट है जो 19th सेंचुरी में ऐसा जो है एक अरेंजमेंट लेके आया। अच्छा, ये खास क्यों है? ये खास क्यों है बताता हूँ। जैसे अगर व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस कहने का सेंस में क्या बोल रहा हूँ कि जैसे अगर मैं ये ले लूं, R1/R2 ले लूं, ठीक है। इज इफ इट इज इक्वल टू R3/R4, मतलब R1/R2 का जो वैल्यू होगा, ठीक है, इफ इट इज इक्वल टू R3/R4, देन अच्छा, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? R5 विल बी जीरो। इस वाले में करंट जाएगा ही नहीं, इट विल नॉट इवन ग्लो, ठीक है। इट विल नॉट इवन ग्लो, ठीक है। ये चीज अगर चाहिए तो अभी मैं दिखा देता हूँ, सर्किट डायग्राम में मैं कनेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर R1 और R2 का रेशियो सेम है R3/R4 के रेशियो से, देन करंट विल सिंपली गो फ्रॉम हियर, और ये इधर से निकल जाएगा, ये इधर से जाएगा, ये इधर से निकल जाएगा, देन नो करंट विल गो इन दैट सर्किट, ठीक है। अच्छा, बैलेंस होने का ये भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि R1/R2, आई कैन राइट इट एज R1/R3 ऑल्सो। R1 ये ले लो, R3, इफ इट इज इक्वल टू R2/R4। अच्छा, मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है, ठीक है, इसी को बस रीअरेंज कर दिया, ठीक है। ये R3 को यहाँ लेके आ गया, R2 को मैंने यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। उसी चीज को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। इन शॉर्ट, इसको थोड़ा और रीअरेंज करने का मन है तो ये भी लिख सकते हो, R1/R4 का जो वैल्यू इफ इट इज इक्वल टू R2/R3, इसके वैल्यू के बराबर, देन R5 जो होगा उसमें जीरो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। इसमें जीरो रेजिस्टेंस होगा। ये क्लियर हुआ? क्लियर है? ओके। नाउ एक चीज आता है शॉर्ट सर्किट का, उसको भी मैं क्लियर करते चलूं यहाँ पे। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? काफी बार सुना होगा ये टर्म ना, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट जब भी किसी वायर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, और या फिर यू कैन से, इसको हम लास्ट में एक डोमेस्टिक वायरिंग का एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसमें समझे तो ज्यादा बेटर होगा। इसमें एक वायर होता है, लाइव वायर होता है, और एक न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है। अगर ये गलती से बीच में कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए ना, तो उस सिचुएशन में ये शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। अभी मैं सिमुलेशन से भी उस चीज को भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो नाउ, okay, now if you can see, I have connected in the same way. This is a kind of arrangement that is called as the Wheatstone bridge. Okay, now if I switch it on, see, I have used the same bulbs. Bulbs are acting as a resistors here. Same bulb it is there. So if you make that like R1/R2 equals to R3/R4, it will come. Okay, in that case, if I switch it on the circuit, okay, see what happens when I switch it on. ओके, हो जा भाई हो जा, क्या दिक्कत आ रही? हाँ, देख अभी, इन दिस केस इफ यू कैन सी द करंट इज फ्लोइंग पासिंग थ्रू हियर, हियर इट इज कमिंग बैक,
यहाँ पे इधर से गया एंड इट इज कमिंग बैक, कोई भी करंट जो है इस वाले सर्किट में मूव नहीं कर रहा है एंड दिस बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ये सारी चीजें अगर बैलेंस हो तो इस वाले एक अरेंजमेंट को हम जो है क्या बोलते हैं, Wheatstone bridge बोलते हैं। एंड इन दैट केस द करंट विल नॉट पास थ्रू द मिडिल रेजिस्टर। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, यहीं पे मैं कोशिश करता हूं एक शॉर्ट सर्किट लेट मी डू। अगर मैं यहां से वायर कनेक्ट कर दूं तो समवेयर, ओके सी बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ कि नेगेटिव टर्मिनल जो है उसको मैं पॉजिटिव से कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये वायर यहाँ ले गए एंड मैं माय एम इज टू कनेक्टेड हियर। ठीक है, क्लियर। अभी इस केस में मैं क्या किया, द पॉजिटिव टर्मिनल जो है इसका जो लाइव वायर है उसको न्यूट्रल वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया। नाउ लेट अस स्विच इट ऑन। गया, खत्म। ठीक है, क्लियर। तो ये होता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये जो सारा इक्विपमेंट है इट विल स्टॉप वर्किंग, इसको अपना दूसरा कोई पाथ मिल जाएगा। ठीक है, एंड बैटरी विल जस्ट गो, खत्म। इफ दिस इज क्लियर लेट्स गेट बैक टू आवर डिस्कशन। Okay, so now this is all about today's lecture where we talk about the series combination, we talk about the parallel combination। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, एमीटर को हम पैरेलल में क्यों, एमीटर को हम सीरीज में क्यों डालते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल में क्यों डालते हैं। हमने शॉर्ट सर्किट की बात करी, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करी, और हमने इस चीज के बारे में भी बात करी कि हम घर में जो हम सर्किट यूज करते हैं, सो व्हाई वी प्रेफर टू यूज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में बातें होगी। I must tell you again that this topic is really, really important. When I will come back with the questions, okay, so like 50% of questions, 50-60% of the questions in the tomorrow's lecture will be from the previous year. Okay, some more. So there is a lot of question. इसलिए मैं एक पूरा सेशन रखने वाला हूँ इस टॉपिक पे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, so in next lecture we will do a lot of problems based on just the combination of resistors। ठीक है, आई होप दिस वाज क्लियर। ओके, अगर नहीं समझ में आया गो बैक टू द वीडियो, ट्राई टू सी इट अगेन। 1x पे देखना है, 2x पे देखना है, वॉट एवर इज योर स्पीड जस्ट सी इट। ओके, ओके, एंड आफ्टर सीइंग दैट ओनली कम टू द नेक्स्ट लेक्चर वेयर वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।